complete, almost complete. Only 2 3 topics left that we try to cover for discussion session, right? So in ADBMS, the important facts that we have discussed is the normal RDBMS portion, that is started with RDBMS, distributed database concepts that we have discussed. Then we have discussed ER diagrams. Then after that we have discussed relational algebra with some numericals, with few numericals. Then we have discussed the enhanced portion of the ER diagram. Then the means come to the advanced portion, PLSQL portion we have discussed, trigger portion we have discussed, then concurrent transaction processing we have discussed, and through discussion series we try to cover the indexing portion. Out of that few topics being already covered, then the remaining portion will be covered. So your syllabus is almost complete. That is okay. So from yesterday, you have seen that I try to start a session that is focusing on the important technical questions that to be asked in some examinations like GATE and UGNet and other interviews for some IT companies like TCS, IBM, Infosys. Okay, so I hope the students present today were also present in the last session, right? आप जितने लोग हो last session में Yes, भी sir. so I hope you already know. Today I'm not going to extend the class for more more than means few minutes because I need to close it. But before that, I'll discuss few questions, no doubt. So without wasting time, I'm coming to the question part. Is it okay for all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And one thing is big mistake I did that this morning session during the AI lecture I forgot to start the record mode. Okay, so that's very bad thing I have done. Don't worry, I'll try to conduct it again and I'll try to record and then share it to you. Okay, is it okay? Okay, sir. Yes, sir. Due to the mobile, I am facing a lot of problem. That's why. No doubt. Let's come to the questions part. Only a few questions today I discuss. After that, I'll leave. Okay. So in the last lecture, someone asked me about the question number 4, I think, to be discussed again. So see what is going on. The question is asking that what is the output of the following code. But the way this loop is being conducted, you are not going to get any output, right? ये जो लूप है, लूप का कंडीशन है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या ये आउटपुट आपको मिलेगा? आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा इससे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी गॉट द आंसर एज नो आउटपुट. ठीक है, फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया है तो इसको एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि फिर से एक बार इस ये वाला पोर्शन को डिटरमाइन करते हैं. इंटीजर m is equal to 100 while true, then if m less than 10 continue, but you know that m is what, 100. So that being again 100 is equal to means m is equal to what it becomes, 100 minus 10, like that. So we are not going to print any or have out any output. So that's why the option C. Now coming to today's question, please look at the question. सभी लोगों का ध्यान है ना अभी क्लास में? तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. Which event gets fired when user presses enter in a text field? ये पहला है. Second, a check box is clicked. दो इवेंट आपको दिया गया है, ठीक है? जब मैं आंसर पूछूंगा तब जवाब देना, ठीक है? सभी लोगों को 1 मिनट या तो 2 मिनट में सोचने के लिए दूंगा, उसके बाद जब मैं पूछूंगा कि आंसर दो तब आंसर दोगे आप लोग, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको? आप सभी लोग जानते हो टेक्स्ट फील्ड क्या होता है. यू ऑल नो व्हाट इज टेक्स्ट फील्ड, राइट? यूजर प्रेसेस एंटर इन द टेक्स्ट फील्ड, व्हाट इवेंट विल गेट फायर्ड बिकॉज ऑफ दैट? देन सेकंड, a checkbox is clicked. चेकबॉक्स आप क्लिक कर रहे हैं तो क्या इवेंट होगा? नाउ ऑप्शंस गिवन लाइक एक्शन इवेंट एंड आइटम इवेंट, adjustment event and action event, change event and item event, item event and item. अब ऑप्शंस देख के
एक मिनट का टाइम लो और इसका योर टाइम स्टार्टेड नाउ. Okay, now give me the answer. What will be the answer of this question? Sir, I think option A, action event and item event. Because item event means when we choose one checkbox, it is click one item, and in enter means we have to some action perform. Okay, good. Your response been recorded. Now, Okay, sir. anyone else wants to try? Please give me the answer with your means region to choose that answer. और कोई जो जवाब देना चाहते हैं पूछ सकते हैं प्लीज. See, in one cases you press enter in the text field, and another cases you are just clicking the checkbox. Okay, from that itself you can guess that what is going on actually, what type of event being get fired, right? So try to guess like that and tell me the name of the events. बाकी को कोई बताना नहीं है क्या ऑप्शन क्या होगा. Sir, E. Okay, why? ठीक है, मैं हुआ वाला ज्यादा पूछते नहीं रहूंगा, नहीं तो ऑप्शन बताना ही छोड़ेंगे कौन सा है. अपने हिसाब से बता दो, किसी को बताना है कि रीजन क्या है. So time already completed. I'm telling you the answer. That is, their answer is correct. Rajesh and the one who have said A, that is correct. Action event and item event. In fact, it is very easy to determine. क्यों? पहले क्या कर रहे हो? Press enter. You are performing some action or not? कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? रेस्पॉन्स दो भाई. कुछ हो रहा है इसमें? Yes, sir. यस सर. हाँ सर, Yes, हो sir. रहा है. मतलब टेक्स्ट फील्ड में जैसे अगर नया टेक्स्ट फील्ड होगा तो सर उसमें चले जाएंगे हम लोग एंटर, वेरी मतलब गुड. नेक्स्ट लाइन में. वही ठीक है. तो कुछ some action is being performed. Then check box. Checkbox is a kind of item, right? So when you click that, so some item event being occurred. So correct option will be option A. Very good. You both are correct. Correct answers. Coming to the next question. Name the class used to create these two. ठीक है. I know that sometimes questions may be out of syllabus, but इसी से तो सीखो. इसी से एटलीस्ट एक दो कंट्रोल के बारे में आप नाम, क्लास के बारे में आप नाम याद रखोगे. ठीक है. तो लिस्ट कंट्रोल एंड कम्बो बॉक्स कंट्रोल, they will fall under which class? Your time started now. When I will ask, you will give the answer. So I Take think 1 option minute of C. time. So J list and J combo box. Okay, your response recorded. So answer C. Okay, So J list and J combo box. well, ठीक है. ओके, और कोई बताना चाहेंगे कुछ और ऑप्शंस? Of course, your answer is correct. Yes, sir. J J list. list and combo box. Right, that is the correct answer. J list and J combo. Very straightforward question.
क्वेश्चन, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर द क्लास। कभी बोल दिया कि लिस्ट कंट्रोल किसके अंदर आते हैं, आपका जे लिस्ट, combo box, say combo box. So coming to the next question. Next question, please. When I will ask, then you will reply the answer. You will take 1 minute of time, all of you. Okay. How many times the following code prints the string Assam? For I goes from 1, I less than equal to 1000, I plus plus, see out Assam. So दिया हुआ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? योर टाइम स्टार्टेड नाउ, 1 मिनट लो और आंसर बताओ। मैं जब सर बोलूंगा ऑप्शन डी सिंटैक्स एरर। ओके, पूछने से पहले ही आंसर मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर मत सुनना अभी, बाकी लोग अपना दिमाग लगाओ क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, आप लोग आंसर बता सकते हो अभी। सर दिया होगा सिंटेक्स एरर। और देखो, मैं खुद होके आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, 1 to 2 minutes ऑफ टाइम यू कैन टेक। डायरेक्ट बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार सोचो, उसके बाद जवाब देना है। हाँ, जब मैं पूछूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, अभी मैं पूछ रहा हूँ आप लोग क्या होगा आंसर इसका। नाउ यू टेल मी द आंसर। सर आई थिंक ऑप्शन डी सर, सी आउट में सर डबल ब्रैकेट नहीं लगाना सर एंडिंग में, मतलब सेमी कॉलन से पहले। ओके, योर आंसर बीइंग रिकॉर्डेड। Anyone else wants to give the answer, please? चलो मैं ही आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा बी। क्या ये आंसर सही है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो, ये कोड यस सर। फॉर आई गोज फ्रॉम 1, आप लोगों का जो आंसर था, इसलिए मैंने बोल रहा था आप लोगों को कि थोड़ा टाइम लो। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को बोलूंगा कि आंसर दो, तब देना, ठीक है? गलतियां मत करना। क्या हो रहा है, देखो, कोड को आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, इसलिए गलती कर रहे थे आप लोग जितने भी रेस्पॉन्स दिए। तो क्या हुआ था, आई गोज फ्रॉम 1, आई लेस देन इक्वल टू 1000, I plus plus. But you guys forgot about the semicolon that I have put here. मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, एक सेमीकोलन। तो सेमीकोलन इज द टर्मिनेटिंग सिंबल, तो ये जो लूप है यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहाँ आओगे, ये वाला लाइन में, सी आउट असम। तो ये तो एकदम पूरा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, असम। तो कितने बार प्रिंट हो रहा है, एक बार। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट आई मीन टू से दैट दिस कोड इज ओके, but the problem is that for loop we have not included any printing statement, see any cout statement with respect to for, because that for loop is being terminated with this semicolon. This line, cout Assam, this is the next statement, and it will be printed as it is, that is Assam. So Assam will be printed 1. So that's why answer will be option B. Is it okay to all of you? Now you got it? यस सर। Wahi. यस सर। Okay, very good. So answer is B. Coming to the next question. आप फिर से बोल रहा हूँ. When I will ask the question, I want that all of you should try for 1 minute. Then I will ask, then you will answer. Which allows you to create a derived class that inherits properties from more than one base class. Option A, hybrid inheritance. Option B, hierarchical inheritance. Option C, multi-level inheritance. Option D, multiple inheritance. हमें क्या करना है, क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपको एलो करते हैं एक डिराइव क्लास को
बनाने कहाँ से? A more than one base class से. Which inheritance will allow you to do that? Your time started now. I'll ask and you'll answer. 1 minute of time I'm giving it to you. Okay, now you may give the answer. So option Hello. D, multiple inheritance. Sir, option D, multiple inheritance. किसी ने ऑप्शन बी बोला, किसी ने सी बोला. कौन कौन बी बता रहे, कौन कौन सी? Sir, Moise Goslow. Okay. And D. Sir, Rajesh me, sir. and Gautam. Okay, बाकी लोग. Okay, so no problem. So answer will be your D, multiple inheritance. Why? See, we are trying to inherit property from more than one base class. जब एक से ज्यादा बेस क्लास है, सपोज ए क्लास हमारे पास है, ए बी सी, हम तीनों ए बी सी से एक क्लास डिराइव कर रहे हैं, डी. ठीक है, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. व्हेन वी ट्राई टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज from more than one base class, then that inheritance is known as multiple inheritance. So answer is option D. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay, very Yes, good. sir. Then, next question. Null character needs a space of 1 byte, 0 byte, 3 byte, 4 byte. Null character जो है वो कितने स्पेस लेते हैं आपका? 1 मिनट ऑफ टाइम आपको फिर से दे रहा हूँ. आफ्टर 1 मिनट जब मैं पूछूंगा आंसर दूंगा. Sir, 3 bytes. Wait, I will ask. Okay, please think first. Okay, आप जवाब दे सकते हो. हाँ, So क्या होगा? option A, 1 byte. Sir, 1 byte, 1 byte. A 0 byte. From Rajesh. Okay, 0 byte. 3 byte भी किसी ने बोला है? Sir, 1 byte. 1 byte. ठीक है, वेरी गुड. दैट इज द करेक्ट आंसर, 1 बाइट. देखो, नाल कैरेक्टर जो भी हो, ये कैरेक्टर ही है ना, राइट? हो, जीरो तो हो ही नहीं सकता. 3 बाइट 4 बाइट की तो सवाल ही नहीं उठती. तो 1 बाइट लेंगे. जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, राइट? एंड 3 and 4 तो हो ही नहीं सकता. दिस इज मैक्सिमम. We don't need it. With 1 byte, we can store one character. That is the null character. So answer is option A. Is this clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Yes, sir. Okay. So can I proceed to next question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next question is that the arguments that determine the state of the cout object are known as option A state controller, option B format flags or state flags, option C classes, option D manipulators. ठीक है, आपका समय अभी स्टार्ट होता है. 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद जवाब बताऊंगा. Okay, you may give the answer now. What is the answer? Format flag So option or B, state flag. format or state flag. Option Okay.
किसी ने फॉर्मेट फ्लैग क्या है? सही से ढंग से सोच के बताओ, कुछ भी मत बताओ। क्या होगा आंसर? तो बी होना चाहिए सर, फॉर्मेट सी आउट होना। यस सर, फॉर्मेट फ्लैग। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें बी ही होना चाहिए? क्या रीजन है इसमें? सर फॉर्मेट मतलब सी, सर ये तो सी आउट का है ना सर, सी लैंग्वेज का, सी प्लस 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 और प्लस सी का का। है। हाँ सर, सी आउट में तो हम लोग सर प्रिंट करते हैं, तो सर वो फॉर्मेट एक फॉर्मेट है जिससे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, वही है सर। Okay. Yes, your option is correct, and answer the reason is also somehow correct, but partially. Okay, very good. Yes. The answer is B. Okay. So format flags. यहाँ पे हमें एक नया technical term मिला है. What is that? C++ defines some format flags for standard input and output. आपको पता होगा एक दो stream, input stream and output stream. ठीक है? So उसके लिए हमारे पास कुछ functions है. To manipulate them, we have some functions like flags, setf, unsetf, right? So cout, setf, ioslab. तो ये क्या करेगा? एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये turns on left justification for all the output directed to cout. So with this, actually you may format the input and output directions, right? तो इसीलिए ये आपका किसके अंदर आता है? आपका फॉर्मेट फ्लैग्स, और जिसको हम कभी कभी स्टेट फ्लैग्स भी बोलते हैं, right? So I hope whatever the question today I discuss, all are clear to you. Is it okay? Yes sir. Now I want to ask यस सर। okay? Now I want to ask one question to you that you have to answer by comment. And that question is, what do you understand by insertion and extraction operator? I'm repeating the question again. Insertion and extraction. ये दोनों ऑपरेटर क्या है? What do you understand by them? ठीक है? Is this clear? Question is clear? Okay sir. Yes sir. Okay. So that's it. That's for today. I hope you have enjoyed the session. Yes sir. थैंक यू Thank you सर। sir. सर एक बार अटेंडेंस दिखा दीजिए। अटेंडेंस आपको दिखाई ओ अटेंडेंस मैं दे दूंगा, हाँ हाँ फोटो दे दूंगा, स्क्रीनशॉट। हाँ